डिज्नी हॉटस्टार पे आई सीरीज द नाइट मैनेजर ने काफी लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचा. हमने उसे देखा, अप्रिशिएट किया, एंड इट लेफ्ट अस wanting for more. The good news is that the want and the wait is soon going to be over because the conclusion season 2 आने वाला है. और ये कितने twists, turns, plots के लेकर आएगा? Well, we have the man himself, the creator director Sandeep Modi to answer this and much more. बहुत सारी बातें उनसे होंगी, but सबसे पहले संदीप, a warm welcome on Punjab Kesari Navodaya Times. Thank you so much. It's my pleasure to be here. Please tell me कि season 1 आया, appreciate हुआ, and as I said, it has hooked us, and of course we are eagerly waiting for season 2. So what to expect? I'm asking as a fan. I think कहानी ने जो आपको प्रॉमिस किया था, हाँ. एक्साइटमेंट, थ्रिल, टेंशन, सस्पेंस, रोमांस, हर चीज अब फूट फूट के आने वाली है. इट्स कॉल्ड पार्ट टू, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स अ सेकंड पार्ट, बिकॉज सब कुछ यहाँ पे अब 2x होगा. इज ऑल दैट इज गोइंग टू बी. सो आप देखें और एंजॉय करें. आई थिंक ये शो को हमने जिस मोड पे रोका था, आई कीप Mm-hmm. सेइंग दैट ये एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है कि ये अभी आप ऊपर गए थे और अभी ये बिल्कुल अब नीचे जाके स्पीड पकड़ने वाला है. सो यही एक मोमेंट है. इट्स ऑल गोना गेट रियली deep, exciting, and I think the word I'll use is it's going to be an adrenaline rush. That's what is the finale. ओके. सो सिंस you're the creator director, आप जानते हैं सीजन 2 में क्या होने वाला है. बट एज ऑडियंस, जब भी हम एक सीरीज देखते हैं, उससे कनेक्ट हो जाता है, फिर उसका नेक्स्ट सीजन जब आता है और उसका ट्रेलर टीजर जब हम देखते हैं, तो हम भी ना एक डायरेक्टर क्रिएटर बन के अपनी एक कहानी बनाने लगते हैं, इसमें अब ऐसा होगा ऐसा. सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सीजन 1 had a lot of thrills, but we knew कि भाई ऐसे है, he's going to infiltrate there, and फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो थोड़ा प्रिडिक्टेबल था. जो मुझे टीजर सीजन 2 का नजर आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर शेड्स, आर्क्स और ग्राफ्स चेंज होने वाले. इज इट राइट? आई थिंक अभी अभी आप मुझे स्पॉयलर्स दे देंगे तो फिर कैसे मजा आएगा. मैं कहूंगा जो आप सोच रहे हैं समझ इट्स लीजिए ऐसा मच मोर. नहीं होगा. कुछ और ही होगा और बेहतर होगा. ओके. ओके. सो बट टेल मी, जब आप सीजन 1, व्हेन यू हैड दिस आइडिया इन योर माइंड और आप बना रहे थे उसको, डिड यू एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म में देयर इज सो मच across so many mediums to watch for us as an audience, did you expect it to get so much viewership and attention? मुझे पता था कि जो हुआ है, जो बना है, वो अच्छा बना है एंड ऑडियंस विल लाइक इट. पर इस लेवल पे प्यार मिलेगा. इट इज एक्चुअली जेन्युइनली क्वाइट ओवरवेलमिंग. आई लास्ट 3 महीने से कहीं भी मैं जाता हूँ, दो चीजें होती है. सबसे पहले लोग कहते हैं हमें आपका शो देखा और बहुत पसंद आया, और दूसरा अगले एपिसोड्स कब आ रहे हैं. सिंस यू आर द क्रिएटर, आपको एक रूम में बंद कर देंगे, आपको बताना पड़ेगा. हम आपके घर आ जाए क्या, आप घर पे दिखा सकते हो. सो इट इज ओवरवेलमिंग टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया हैज क्रॉस जेन्युइनली ऑल एक्सपेक्टेशंस. बना भी रहे थे तभी लग रहा था कि वी आर डूइंग समथिंग राइट, बट आई थिंक द ओनली वन who had predicted it right from day zero was sir Anil Kapoor साहब. और हमेशा कहते थे कि इस something is right about the show. The casting is right, the crew is right, the way you're directing is right. It's falling together, Sandeep. I think there's nothing which can stop this show. So I think he was the one who had predicted it. और हमें लगता था सर अभी दिल्ली दूर है, आप क्या कह रहे हैं इतना जल्दी, don't jinx it. But yeah, I think he could see it. He's a visionary in that way. Right. But how did this idea come into mind कि इसका एक इंडियन वर्जन भी आपको बनाना है? How did this all happen? Actually, I I didn't choose the story. The story chose me. Okay. जब ये जॉन ले कार्रे साहब इन्होंने ये नॉवेल लिखी है यूके में, उनकी फैमिली इज द प्रोड्यूसर ऑफ द ओरिजिनल शो. और उन्होंने डिसाइड किया कि ये कहानी अनफॉर्चुनेटली बहुत रेलेवेंट है. आज भी वी आर लिविंग इन वॉर टाइम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, of warmongers and arms dealers, and they felt कि the country which is so passionate about stories uh, is India, and यहाँ के लिए अगर हम ये बनाएं, इसे adapt करें. So they approached me at that point, or I had just finished Arya season 1, and
I was the co-creator with Ram Advani साहब on that one. और मैं भी ढूंढ रहा था कि अब और कौन सी कहानी है जो which will really work with me. So when they offered this to me, मैंने देखा, और पहले तो लोगों ने कहा कि ये it's one of the most loved things across Europe and Americas. तो आप शायद गलती कर रहे हैं to even think of considering of adapting a popular thing like that. हम्म। जब मैंने देखा, मुझे लगा कि कुछ चीजें हैं जो एक्चुअली वी कुड इम्प्रूव. तो मैंने कहा विद ऑल ह्यूमिलिटी दैट अगर ये परफेक्ट होता ना, आई वुडंट हैव टच्ड इट. आई वुड नेवर टच शोले. शोले फॉर मी इज परफेक्ट. यू नेवर टच एनीथिंग विच इज गोल्ड. पर यहाँ पे विद ऑल यू फील दुनिया बदल गई है. There is a pre-COVID world, there's a post-COVID world. There is a way we look at a story in Europe, but the way we look at stories and emotions in India. हमारे लिए प्यार बड़ी चीज है, बट गिल्ट, एक एक बच्ची की मौत, ये बहुत बहुत गहरी चीज है हमारे लिए. हम्म। तो आई एंड इवन दोस्ती, these are themes which we really delve deeper. So once I knew what these are things which I want to add to an already brilliant story, it became wholesome. and लगा कि अब ये कहानी का एक मेरे पास एक बैरोमीटर है, राइट फ्रॉम आर्या टू नाउ, दैट जिस दिन आपको लगे कि ये कहानी अपनी मिट्टी से है, तब वो अडेप्टेशन सफल है. अगर राइट। वो लगे कि उसमें एक इतना भारी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, बस आपने एक पहनावा इंडियन पहना दिया है, दैट विल नेवर वर्क. सो आई थिंक विथ ऑल आवर एफर्ट्स ऑफ द राइटिंग टीम एंड एवरीबडी, जब हमें वो एक एक लगा, सुर पकड़ा हमने, आई थिंक वी न्यू वी वर इन अ गुड स्पेस. हम्म। राइट, बट संदीप, जैसे अगर किसी बुक से एक अडेप्टेशन हम लेते हैं, वी मेक अ सीरीज आउट ऑफ इट, तो एक रेफरेंस होता है ऑडियंस के पास. फिर अगर हम कहीं किसी वेस्टर्न जगह पे या कहीं और वो कहानी बनी है, उसका एक कंपैरिजन होता है फॉर द ऑडियंस टू फॉल बैक टू. इन योर केस द ऑडियंस हैड बोथ अ रेफरेंस एंड अ कंपैरिजन. सो हाउ चैलेंजिंग डिड इट बिकम? आई थिंक पता नहीं क्यों, नाइविटी कह सकते हो शायद, या कॉन्फिडेंस कह सकते हो. आई 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 फेल्ट कि ये कहानी को जिस तरह से आप कहते हो ना, और जिस तरह के रेलेवेंस से आप कहते हो, ऑडियंस विल ऑलवेज चूज व्हाट इज रेलेवेंट टू देम. आई थिंक आई ऑलवेज से दैट मोर द मेरियर. जब हमने शो का टाइटल भी अनाउंस किया, पहले शो का नाम हमने अलग सोचा था, वर्किंग टाइटल था, अलग था, बट देन डिसाइड टू गो विद द नाइट मैनेजर. वी वर एक्चुअली बीइंग वेरी बोल्ड कि ये वही नाम है जो उस किताब का था, ये वही नाम है जो उस ओरिजिनल शो का था, हमारा भी वही नाम है. हम कह रहे हैं कि अडेप्टेशन है. और अगर आपको, आई एम इनवाइटिंग कंपैरिजन, कि आप प्लीज जाके वो किताब पढ़ें, आप प्लीज जाके वो शो भी देखें, और फिर आके आप ये शो देखें. एंड आई फील confident that you will realize that there is a merit enough for you to enjoy the show equally, if not less, or if not more, than how you felt about the book and the original show. Because I think, how much ever you love you, Laurie, you can't deny you love Anil Kapoor playing this part. राइट। Oof, it is a dream to see Kapoor Saab do this. To see him in his swag, walk on the beaches of Lanka, walk into his mansion. ये इसका मजा ही कुछ और है. एंड आई थिंक आई हैव नेवर बीन वरीड अबाउट दीज थिंग्स. आई थिंक जो अपनी बात है, और अपनी एक बहुत अच्छा कोट मैंने सुना था. आई जस्ट टेल यू दैट many I think there are every story in the world has been told before, but not by you. It mattered to me that this story was being told by me with a vision which I had set, with a team which was so stupendous and remarkable, who were adding so much to it. So I don't think none of us were ever worried about comparison. In fact, we were inviting it. Right. In fact, comparison when it comes to the actors, of course, those actors have been loved, obviously there and here as well. But when you kind of compare it with what you got us in terms of your cast, you have us people जिनके अगर हमें नाम भी नहीं पता है, हमने उनका कोई past काम देखा है, so we're like, oh, instant connect. Oh, this is a good actor. And obviously the cherry on the cake happens to be Mr. Kapoor himself, जिनका आपने शैली रूंगटा जो कैरेक्टर बनाया है, वन ऑफ द मोस्ट क्लासी विलन्स दैट वी एवर सीन इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एक ऑरा उनका एक बना दिया है. ही इज नॉट विलनस लाइक दैट, बट हिज डिमीनर, ही इज सो शार्प माइंडेड. हाउ मच फन वाज इट टू क्रिएट इट फॉर somebody like Mr. Anil Kapoor? I think it was a dream.
बिकॉज मजेदार बात यह है ना कि I remember my initial conversation with Anil Kapoor Saab. He would say that, Sandeep, I've never played a villain before. And but I said, you know what? What is nice? In every villain in his own eyes is a hero, right? So I said, please, you played like a hero. You played as if this show is not the night manager. The show is called the arms dealer. You played like the arms dealer. You played like a man who believes that मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही है. हाँ. मैं जो कर रहा हूँ ना वो आप जैसे we wrote a few scenes not to be included in the show, but for clarity we wrote about the vision. What is what is the what is the thought in Shelly Rungta's mind? So Anil Kapoor Saab and we wrote it and we said that ये वो कहता है कि अगर मैं अपना काम बंद कर दूंगा, आर्म्स नहीं बेचूंगा, तो दुनिया की सब जंग खत्म हो जाएगी. नहीं ना. तो मैं कौन होता हूँ? आई एम ओनली द मीन्स ऑफ इट. So when we started finding these small nuances to it, the confidence and the swag of a man who's confident came through. We said the villainy is for the story and for from our eyes as the audience to see. You please played and charm us off our feet, and that's what he's so good at, even off screen and of course on screen. I think, but what I really enjoy is I think it's a beautiful thing. I remember talking to Simon Conwell, who's the son of John Le Carre, the novelist who wrote the book. He said he's never found somebody approach this character called of Roper, which we called Shelley Rungta, with so much earthiness and emotion. And I think this is who we are as Indians, right? Right. We put our emotions on the sleeve, whether you're a hero or a villain, this is who we are. We'll hug, we'll get angry, we'll love. Uh, so for me, that fine balance that Kapoor Saab brought, the panache, but the personality, the personalness, I think those things were beautiful. I remember him saying that ये जो नाम है ना इसका, पहले इट वाज नॉट शेली रुंगटा, इट वाज शेली समथिंग एल्स. Hmm. ही सेड यार ये अपना नहीं लग रहा है, ये ऐसा ऊपर सरफेशियल लग रहा है, इसका इसका नाम ये कहाँ का है. एंड देन वन फाइन डे ही कॉल्ड मी टू से, संदीप, कि हाँ सर, रुंगटा, शैलेंद्र रुंगटा बोल रहा हूँ. एंड फॉर 2 seconds आई एम लाइक, अच्छा ही स्टॉप. शैलेंद्र रुंगटा, शेली रुंगटा, व्हाट डू यू थिंक? आई सेड सर, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स इंटरेस्टिंग, वी नेवर हैड. वो कहते हैं ना, बोलते हैं यार क्या होता है ना, हम कपूर ही होता है हमेशा विलन, कपूर ही होता है हमेशा हीरो. हम तो बहुत ही ऐसा एक 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 कुछ कुछ नाम है जो हमेशा यूज करते हैं. लाइक इंडिया सच ए वास्ट कंट्री, हाउ डू वी मेक इट लुक लाइक एन इंटरेस्टिंग नेम from where he comes from. So these contributions came from AK sir, and it was fabulous to piece it one by one. Even the voice of the character, he was so anal about, वो मतलब उसी के ऊपर काफी डिस्कशन हुआ कि उसकी उसकी पिच क्या होगी. और अभी भी शो कंप्लीट हुआ, एंड समटाइम्स आई शो हिम द एपिसोड एंड ही सेज, मैं कल सुबह 2 घंटे डबिंग में आता हूँ. सर हो गया, सब करेक्ट है. इतनी वो डायलॉग में ना वो छूट गया है, वो टोन नहीं है मेरा, वो टोन गलत हो गया है. एंड ही सो हार्ड वर्किंग, ही इज एट इट. सो आपको शर्म आ जाती है कि आपको लगता है कि आप, वो इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको डबल करना पड़ेगा Right. as a director creator. But he's an inspiration, and जिस तरह से उन्होंने किया है, he's made it मजेदार, as you said, and complex and beautiful. Right. So apart from him, of course, being the showstopper, we could say, एक expectation लेके, audience भी जाती है कि, Mr. Kapoor is there, तो ये तो हमें देखने के लिए मिलेगा ही, excellence in performance, etc. Other than that, the rest of the cast, as I said, also has done their jobs perfectly well. So कैसा रहा पूरा shoot experience? Because it's a huge ensemble cast. I think the joy of the show is in the ensemble, and even AK told me, it's not me, is who you surround me with, which will make it what we'll do of it. Whether it is Aditya, whether it is Shobita, whether it is Saswata, Ravi Bail, Tilotama, there's Anand Dukhe, there's Jagdish Rajpurohit. I think the casting of the show is actually something that gives me a lot of pride and joy with. I think we've really gone to depths to say that who should play this character and why. And sometimes we've casted, कहते हैं ना, with the grain. Sometimes we've gone against the grain. Like Tilotoma is a classic example.
जब पेपर पे पढ़ते थे सबको लगता था अरे ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लेट्स कास्ट अ स्ट्रॉन्ग फीमेल। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग थोड़ी होता है कि आपको 5.5 फीट के ऊपर का कोई पर्सन होना चाहिए जो इसका एक लाफा पड़े तो कोई गिर जाए। स्ट्रेंथ इज इंटरनल, अंदरूनी हम्म। शक्ति होती है ना वो, इट इज अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ समबडी। सो आई वाज वेरी कीन राइट फ्रॉम डे वन टू कास्ट तिलोत्तमा बिकॉज आई थॉट दैट इट शुड बी एन एंटीथीसिस। हर उसको देख के लगा ये जो पतली सी दुबली सी स्क्रॉनी सी एक एक एजेंट है, स्पाई मास्टर है, वो कैसे अनिल कपूर who's playing Shelly Rungta, how can she catch him? But the doggedness with which she goes for it, वही एक मजेदार चीज है. So Right. we had a lot of joy, me and Mukesh Chabra, casting the show, piecing together each of these parts of this beautiful engine. Shobita, I think it was such a tough casting, and I was hellbent कि ये शोभिता ही होनी चाहिए. पता नहीं क्यों, I thought I find her very unconventionally beautiful. I find her to be someone whose silences are golden. And I think Kaveri has so much going inside. And ऐसी कौन एक्टर है जो उस ये सब चीज को अंदर रख सके? I thought Shobita is beautiful at that. Aditya has been my favorite. We've पता है शूट के I think after 5-6 days we both had a shorthand. We both had found the sur of Shan Sen Gupta so personally. कई बार होता था कि शॉट खत्म होता था and he would look at me, I would look at him, and we would say, okay, let's do one more. Without a word expressed, he would know what was I looking for, and I would know what was he missing in the Hmm. performance. Uh, I think it is one of the finest working experiences of my life working with this ensemble. It has been an absolute joy. Right. So, abhi ye joy for the audience is soon going to be there. So, is this going to be the conclusion, or can we expect more? Because obviously, we are more greedy for good content. And also, parting note, what to expect? I think I am never somebody who likes to keep things not complete. ये ये पहली बार मैं लाइफ में 4 महीने ऑडियंस को सताया है, बीच में रखा है कि आपको बताऊंगा बताऊंगा क्या होता है. Yes, this will conclude, the season will conclude, but the characters will stay alive, and the Mhm. characters will hopefully come back very soon to take more stories ahead and to entertain you, is all I can That's say. good news. All right. So, you haven't revealed much. You've left it to for us कि भाई release होगा तब देख लेना. एंड आई एम ओनली प्रॉमिसिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डबल एक्स ट्रिपल एक्स जो आपने सीजन 1 में एंजॉय किया. सो यस वी विल वेट फॉर दैट पेशेंटली एंड होपफुली वेरी सून नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेके फिर से इंटरव्यू होगा. सो वी विल कम बैक ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो. सो संदीप, विशिंग यू ऑल द लक फॉर द सक्सेस ऑफ द कंक्लूजन एज वेल एंड ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू. Really appreciate it. बहुत मजा आया. Thank you for these lovely conversations. थैंक यू. द प्लेजर इज ऑल माइन. बाय बाय.